बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to the new lesson. अरबी का नया लेसन शुरू हो रहा है। उम्मीद है आपने पिछले लेसन्स को देखा होगा, पढ़ा होगा और आपने पसंद किया होगा। अभी जो ये लेसन शुरू हो रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। आप गौर से पढ़िए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लेसन्स और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर कर दीजिए और लाइक भी कीजिए। So I say anwa'ul ma'arifi. Ma'arif is the plural of ma'rifatun. So anwa'ul ma'arifi means types of definite nouns. Types of definite nouns. This we will be learning here. देखिए rules will come below. यहाँ पे rules आएंगे। अल मारिफा अन नकीरा के कौन, what are the nouns, what are the types of marfa nouns, right? But before that, let us please try to read what is written here. एक बार इसकी रीडिंग कर लें पहले। Can you read it? Yes, sir. Please read it. Allahu Allahu Muhammadun Rasulun Al-Quran Kitabun Jibril Malakun Kitabun Al-Ilmu Nafi'un Ahmadu Waladun Zaidun Rajulun Al-Waladu Talibun Al-Rajulu Mudarrisun Al-Kitabu Mufidun Yasirun Muhandisun Hamidun Tabbahun Khalidun Ayyasun Ismailu Marrisun Ibrahimu Fallahu Al-Ma'u Baridun Yasirun Muhandisun Sayyidun Muallifun Ar-Rajulu Sa'iqun Ibrahimu Tuwahun Al-Ma'u Baridun Yasirun Muhandisun Sayyidun Muallifun Ar-Rajulu Sa'iqun Asalun Mudirun Asyayu Harun Al-Tawafu Jalisun Al-Hayatu Waqifun As-Sa'iqu Na'imun Al-Falahu Za'iyun Al-Shajaru Qaribun Haza Dukkanun Zalika Tufukun Haza Matba'un Zalika Hammamun Al-Qamaru Baydun Al-Jamalu Kabirun Wal-Hajru Saghirun Al-Hajaru Shaqilun Al-Husnu Shifun Al-Qamisu Wasifun Wal-Mindilu Wasifun. MashaAllah. Now Sindhuja, you please read it. Sindhuja, you please read it now. Please start. Allahu Wahidun. Sorry, Wahidun. Muhammadun Rasulun. Yes, Rasulun. Al-Qur'anu Kitabun. Correct. Next. Jibrilu Malakun. Correct. Al-ilmu
Now, I will do one thing, Sindhuja, for you. I'll sir. read the whole text and Yes, sir. record it and send it to you. Right? Okay, Will sir. it be okay? Yes, sir. I will read out this text, record it, or I'll ask someone to read and record it. It will be sent to you so that when you pronounce, you will be able to check if you are pronouncing correctly or not. है ना? Yes, So yes, it sir. will help you. I'll try to send it tonight. Yes, sir. Okay. Now, everybody, you know that there are two types of nouns in terms of definiteness or indefiniteness. Indefinite. An-nakiratu or nakiratun, an-nakiratu. अब ये an-nakiratu, nakiratun is written as an-nakiratu. Why? Because if I say the indefinite, I will write an-nakiratu. And if I say the definite, then I will write al-ma'rifatu. ठीक है? This is the definite form of these words. Nakiratun is changed into an-nakiratu, and ma'rifatun is changed into al-ma'rifatu. Correct? Indefinite nouns refer to unspecific things, beings or things such as, you know that, है ना? आप जानते हैं ना कि indefinite noun वो है जो unspecific thing है, कोई खास नहीं है. No particular thing. That is babun, jamalun, kitabun, waladun means they are all unspecific. If you say babun, it does not mean which babun, है ना? So any babun, it can be any babun. So it is an indefinite noun. And definite nouns refer to specific beings or things, such as Muhammadun. Muhammadun is definite. Hamidun is definite. Definite. Dilhi. Dilhi means Delhi. Dilhi means Delhi. It is a Hindi name written in Arabic like this, Dilhi. And then Al-Kitabu. Al-Kitabu is also definite, and it is definite by adding al. See, Muhammadun is not definite by adding al. Muhammadun is the word Muhammadun. Dilhi is definite by origin. But Al-Kitabu is not definite by origin. It is definite by making it definite. And you made it definite by adding al. Understand? आप समझ गए सब लोग? मुहम्मदुन अपनी पैदाई, ये वर्ड मुहम्मदुन जो है अपनी बनावट से शुरू से ही मारिफा है, डेफिनेट. हामिदुन इज मारिफा बाय ओरिजिन, अपने बनने से ही मारिफा बना है. मक्कतु जब बना तभी मारिफा बन गया. दिल ही बना तो भी वो मारिफा बना. बट अल किताबु इज नॉट मारिफा बाय ओरिजिन. ये जब बना तो मारिफा नहीं बना था, ये बना क्या था? किताबुन, जो कि वो नकीरा था. आपने इसको अल लगा के मारिफा किया है. यू हैव चेंज इट इनटू मारिफा बाय एडिंग अल. समझ गए? बात समझ में आ गया? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज nouns. Al kitabu is definite by adding al, whereas Dilhi, Makkatu, Hamidun, Muhammadun, they are all definite by origin. है ना? And these which are definite by origin, they are proper nouns. They are Proper noun. nouns which are definite by origin. They are proper nouns. And nouns which are made definite by adding al, they are not proper nouns. They are common nouns. Now, there are some 6 types of nouns. 6 types of nouns in Arabic which are definite. ठीक है? There are 6 types of nouns in Arabic which are definite. अब जब whenever you find them, you see them in a sentence, you will decide or you will understand that the word is definite. है ना? वो टाइप समझ के ये है तो definite होगा. Now, उनमें कौन कौन definite है? नंबर 1, इस्मुल आलामु. अल इस्मुल आलामु. फर्स्ट वन, अल इस्मुल आलामु. फर्स्ट क्या कहते हैं? अल इस्मुल आलामु. अल इस्मुल आलामु मीन्स प्रॉपर नाउन.
What do you call it? Proper noun. Proper noun. Noun. What is the Arabic for proper noun? Al-ismul alamu. Al ismul alamu. Alamu. ठीक है, समझ गए? अब जो भी प्रॉपर नाउन है सब डेफिनेट है. फॉर एग्जाम्पल जईदुन प्रॉपर नाउन डेफिनेट, अहमदु प्रॉपर नाउन डेफिनेट, मारिफा, फातिमतु प्रॉपर नाउन सो इट इज मारिफा, जैनबु प्रॉपर नाउन सो इट इज मारिफा, बातना, बातना मीन्स पटना, पटना is written as batna or batna in Arabic. We will write is batna or batna. So batna is definite Proper because noun. it is a proper noun. Al-Hindu, Al-Hindu means India. Al-Hindu, it is a definite noun because it is a proper noun. Because it is a proper noun. These are the types of marfa. So whenever you find the proper noun al-ismul alamu in a sentence, you should know that it is a proper noun. It is a definite noun. अच्छा, एक बात यहाँ पे सवाल होगी मिस्टर सिबगतुल्ला कि हम जो है आपको डेफिनेट नाउन की पहचान क्यों करवा रहे हैं? Why I want you to identify, to recognize इसमुल मारिफतु, है ना? इस मारिफा को हम क्यों चाहते हैं कि आप पहचाने? क्यों पहचानना चाहते हैं? ये नहीं मालूम है? इसका मतलब ये है, ये बताना चाह रहे हैं हम कि कुछ प्लेसेस हैं सेंटेंसेस में, sentences में, अरबिक सेंटेंस में there are certain places where you have to put definite noun, है ना? अल इस्मुल मारिफा, वहां पर इस्मुल मारिफा ही लाना होगा, अन नकीरा नहीं आएगा. Right? There are some places in Arabic sentences where only marifa can be placed. So identification of marifa is very important. That is why I am helping you to identify and recognize nouns marifa. है ना? समझ में बात आ रही है? So now all the proper nouns al ismul alamu are definite. Second, ad-damairu, pronouns, plural of damir is damairu. Plural of damir is damairu. Ad-damairu, it means pronouns. All the pronouns in Arabic are definite. All the pronouns are definite. He, she, it, I, you, we, they. There are 7 pronouns in English. He, she, it, I, you, we, they. They are all definite. Do you have a notebook there? आपके पास notebook है वहाँ पे? So write down. These are the words I would like you to note down. The word is huwa. Huwa means he. Huwa means he. Then it is hiya. Hiya means hiya. 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 Not hiya. Not double ya. Single ya. Hiya. Hiya. Hiya is she. She. Whom. Whom is they. Whom is they. Ana. Ana means I. Ana means I. Anta. Anta means you, male. If it is a male, you, then you will say anta. And nahnu. Nahnu means we. Nahnu. We. So huwa, hiya, hum, ana, anta, nahnu. Huwa, hiya, hum, ana, anta, nahnu. These are all pronouns. ये सब क्या है? ये सब pronouns. और pronouns आप जानते हैं कि इसम होता है. यहाँ अरबिक में pronoun भी इसम होता है. तो जब ये इसम है तो कौन सा इसम है? मारफा है कि नकरा है? Is it a marfa ism or nakira ism? Then the answer is marfa. है ना? What type of a noun is it?
Marfa. All Definite pronouns are marfa. So we have learned two types of pronouns so far. One is ismul alam, proper nouns. Two types of marfas we have learned so far. Ismul alam, all ismul alam are marfa, definite. And all pronouns are marfa, definite. Marfa. ठीक है, याद रहेगा, all pronouns are marfa, definite. And all ismul alam, proper nouns are marfa, correct. तीसरे टाइप को समझिए, थर्ड टाइप हाजा जालिका. हाजा जालिका पढ़ लिया है ना अभी, वी हैव स्टडीड हाजा एंड जालिका. हाजा, व्हाट इज हाजा? यू नो दैट ismul ishara, This. demonstrative pronoun. Haza is a demonstrative pronoun. Demonstrative Ismul ishara. Zalika is also ismul ishara. Hazihi is also ismul ishara. Tilka is also ismul ishara. Haulai is also ismul ishara. Ulaika is also ismul ishara. There are some 2-3 more ismul ishara you will learn later. जब इसका चैप्टर शुरू होगा प्रोनाउन का या ismul ishara का, तो डिटेल पढ़ेंगे. हाजा, जालिका, हादिही, तिलका, हाउलाई, उलाइका. हाजा means this, you know, है ना? This used for masculine, used for singular, and used for things which are near. Nearer. And yeah, and dalika means that which is used for singular, used for masculine, that is far. Hadihi is feminine, tilka is also feminine, haulai means these, ulaika means those. Now, I am not going to tell you any details of it at this point. Just remember that all demonstrative pronoun, all kullu asma'il isharati, all the demonstrative pronoun, hada, dalika, hadi, tilka, haulai, ulaika, they are all definite. Marifa, ismum marifatun, they are all ismum marifatun. Hada is marifa, dalika is marifa, hadihi is marifa, tilka is marifa, haula is marifa, ulaika is marifa. Now I ask you, why is hada, how do you say that hada is marifa, or how hada is marifa? What will be the answer? Because it is ismul ishara. Very good, Alia. Because it is ismul ishara, demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun होने से वो definite हो गया. How can you say wasifa that huwa is marifa? It is also ismul ishara. No, huwa is not ismul ishara. Damairu. It comes under pronoun. Huwa is a pronoun. Because huwa is a pronoun. The pronoun damir is ismum marifatun. Huwa is marifa because it is a pronoun. And why is here definite, Sindhuja? Because it's a pronoun. Because it's a pronoun. And why is Ahmadu marifa, Mr. Rasul Akhtar? It is al-ismul alamu. MashaAllah, it is al-ismul alamu, proper noun. And why is Dalika, Sania, you will answer. Sana, you will answer. Why is Dalika marifa? Sania, Daraksha, you are not there? Not connected. Anyway. Now, go ahead. अब जो है, 2 more types are there. एक type है, 4th type कौन है? अस्माउल मौसूला. आप कुरान में पढ़ेंगे अल्लदी, अल्लती, अल्लदानी, अल्लतानी, अल्लदीना, अल्लाती. They are all relative pronouns. क्या है ये? Relative pronouns. इसका डिटेल बाद में बताएंगे. अभी if I teach you relative pronouns now, you will get confused. So just remember that relative pronouns are also marifa. ठीक है? Next type is mu'arrafum bi al. Mu'arrafum bi al. Nouns made definite by al. Noun which have got al added to them, they are all
मारिफा, ये तो आप जानते हैं पहले से भी, है ना, दिस यू नो। तो पांचवा टाइप ये है अल इस्लामु। व्हाई इज अल इस्लामु? अल इस्लामु मारिफा। कैन यू टेल मी हाफिज साहब, हाफिज सलीम साहब? जी सर, अल इस्लामु मारिफा पहले अल लगाकर उसको डेफिनेट बनाया सर। बना गया। ये इसलिए मारिफा है बिकॉज इट इज मुअर्रफुम बि अल, क्योंकि ये मुअर्रफ भी अल है, क्योंकि ये मुअर्रफ भी अल है ना? हाँ। नाउ अनस, अनस कैन यू से Yes, sir. व्हाई ar-rajulu is मारिफा? Because it is made Because it is definite मुअर्रफ by भी अल, adding al. मुअर्रफ जी। भी अल, बिलाल इज मुअर्रफ भी अल, अल से मुअर्रफ हुआ है, अल से मारिफा हुआ है। मुअर्रफुम भी अल मींस अल इज एडेड टू मेक इट मारिफा। Al is added to the prefix as prefix. हाँ, मुअर्रफुम भी अल मींस अल एडेड टू मेक इट मारिफा, राइट? सो ar-rajulu is मुअर्रफ भी अल, so it is मारिफा। नाउन, a noun that is annexed to a definite noun, है ना? ये देखिए एक एनेक्सेशन होता है अरबिक में, एनेक्स कहते हैं, इंग्लिश में भी होता है। इंग्लिश में होता है जैसे इफ यू से अकबर्स पेन, अकबर्स पेन, Akbar और अकबर्स शर्ट, खालिद शर्ट, अकबर्स शर्ट। सो यहाँ जो हो रहा है ना, शर्ट इज एनेक्स्ड टू, shirt is annexed to Akbar. It is indicated that the shirt is Akbar's possessed by Akbar. The shirt belongs to Akbar. है ना? This is called annexation. है ना? Mudaf. So in Arabic also this annexation is there. Qamisu Khalidin. Qamisu Khalidin. What is written here? Qamisu Khalidin. Now here dun नहीं हो सकता. You cannot write Khalidun. So there are places in Arabic where you have to use majroor, where you have to use mansoob, where you have to use mansoob or majroor or marfu. So I gave you the knowledge about marfu, mansoob and majroor. Here the place of majroor is there. So I write Qamisu Khalidin. It means the qamis, the shirt of Khalid, or Khalid's shirt, shirt belonging to Khalid, or the shirt possessed by Khalid. Understand? तो अगर ऐसा एक्सप्रेशन है तो यहाँ जो कमीसुन है, कमीसुन, इसमें तो अल नहीं है, बट इट इज मारफा बिकॉज इट इज मुजाफ, मुजाफ टू खालिद. कमीसु इज मारफा बिकॉज इट इज मुजाफ टू खालिद. थ्री नाउन्स यू हैव टू रिमेंबर हियर ओनली. 3 नाउन को अभी यहाँ पे आपको याद रखना है, बाकी 3 को आप भूल जाएं तो कोई मतलब नहीं है. You can forget the rest 3. 3 nouns you have to remember that they are marfa. Rather 4 nouns. 4 nouns you will remember now. Number 1, al ismul alam. Proper nouns are marfa. Pronouns are marfa. है ना? Demonstrative pronouns, asmaul ishara are marfa, and mu'arraf bi al are marfa. All proper nouns are marfa. All pronouns are marfa. All demonstrative pronouns are marfa, and nouns made definite by al are marfa. Correct? This much you have to remember. इतने 4 अभी याद रखना है, बाकी 2 को आप if you like you can forget. ठीक है? जब आप ये समझ गए हैं तो tomorrow I will teach you this chapter, and ये जो अभी आपने पढ़ा इसका complete word by word, letter by letter explanation इंशाअल्लाह ताला हम कल इसका करेंगे. Page number 40. Allahu Wahidun Muhammadun Rasulun Al Quranu Kitabun. I will give every detail about these expressions. ठीक है ना? Complete इसमें समझाएंगे आपको इंशाअल्लाह ताला, तो आप समझ जाएंगे. Time is running out. So that's all for tonight. Thank you very much. Allah. अस्सलाम वालेकुम सर. Allah. उम्मीद है आपको ये एजुकेशनल वीडियो पसंद आया होगा. लाइक कीजिए और अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर कर दीजिए.
ताकि आपके सारे कॉन्टैक्ट के लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और अभी सुफ़ा स्मार्ट स्कूल की तरफ से और सुफ़ा ग्लोबल क्लासरूम की तरफ से बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस लगातार आने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो वो आपके पास फ़ौरन पहुंच सके।